यस गाइस, वेलकम बैक। आइए आगे लिखे। अभी ये सबको याद हुआ, डिफरेंस समझा। नॉर्मल इंडिविजुअल 250, 3 लाख सीनियर, 5 सुपर सीनियर। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे अभी आपने ये लिखा ना, इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते थे। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो इसके दूसरा वे भी लिखवा देता हूँ। कोई कोई ऐसा भी लिखता है, इनकम टैक्स रेट फर्स्ट 3 lakhs nil, next 2 lakhs 5%, next 5 lakhs 20%, बैलेंस 30%। समझा? जो ऊपर लिखा वही चीज को मैंने अलग वे से लिखा है। इसमें भी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इनकम टैक्स रेट फर्स्ट ₹5 lakhs नहीं, नेक्स्ट ₹5 lakhs 20%, बैलेंस 30%। बराबर सेम यहां पर फर्स्ट ₹2,50,000 nil, next ₹2,50,000 5%, next ₹5 lakhs 20%, next rupees नहीं, बैलेंस 30%। ये समझा क्या? यानी ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल के केस में टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल इज नथिंग बट स्लैब सिस्टम। बोल सकते हैं ना ऐसा? अब ये जो टैक्स है, ये पूरे टैक्स पे अपन ऐड करते हैं सरचार्ज। बरोबर? सरचार्ज क्या रेट से रहता है? 10% of tax if net total income exceeds ₹50 lakhs but does not exceeds, मुझे लगता है मैंने गैप ज्यादा छोड़ दिया इसलिए एक लाइन में नहीं आ रहा है, थोड़ा और नजदीक नजदीक लिखता हूं। 10% of tax if net total income exceeds ₹50 lakhs but does not exceeds ₹1 crore, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। 15% of tax if
net total income exceeds 1 crore but does not exceed rupees 2 crores. 25% of tax if net total income exceeds rupees 2 crores but does not exceed rupees 5 crores. 37% of tax if net total income exceeds rupees 5 crores. इससे तो एवरेज रेट पे लगा देते तो ज्यादा अच्छा होता। पर सोचो अभी रियल लाइफ में तो इसका कुछ टेंशन नहीं है क्योंकि कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है, पर एग्जामिनेशन में तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना अगर टैक्स रेट पूछेंगे तो आपको तो सरचार्ज सब याद होना चाहिए। आओ आगे, ये लिखा शब्द है फिर add health and education cess at the rate of 4% of income tax plus surcharge. ये समझा सबको? अच्छा आगे, what is marginal relief? मार्जिनल रिलीफ मतलब क्या होता है? In case of surcharge, if increase in tax due to surcharge is more than increase in income, then marginal relief is allowed of such excess increase in tax. वो जो एक्सेस है उसका मार्जिनल रिलीफ अलाउ होगा। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आगे, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो क्वेश्चंस में आएगा ये। रेफर एग्जाम्पल 7, 8, 9 ... ऑफ नोट्स। ये समझा सबको? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मार्जिनल रिलीफ will be
to a certain limit of income. In notes, there is table in which it is given. बरोबर, नोट्स में टेबल है जिसके अंदर ये सब दिया हुआ है. फिर आता है व्हाट इज रिबेट. अंडर सेक्शन 87A, रिबेट मतलब क्या होता है? It is allowed to individual taxpayer. बराबर, it is allowed if net total income does not exceed ₹5 lakhs. यानी 5 lakhs या लेस इनकम है. इनकम इज ₹5 lakhs or less. बरोबर. तीसरा, इंडिविजुअल should be रेसिडेंट. इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए. अमाउंट ऑफ रिबेट is equal to amount of tax or ₹12,500, whichever is less. बराबर, दोनों में से जो लेस होगा. और 5 लाख के ऊपर तो रिबेट मिलने वाला ही नहीं है, तो कोई टेंशन है ही नहीं. Rebate is allowed in computation of tax before surcharge and cess. सरचार्ज और सेस के पहले ही रिबेट अलाउ हो जाता है. अब कॉमन सेंस की बात है कि ये रिबेट इंडिविजुअल वगैरह को नहीं मिलेगी, अरे सॉरी एचयूएफ वगैरह को नहीं मिलेगी, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स वगैरह को नहीं मिलेगी. बरोबर, यानी ये खाली इंडिविजुअल, वो भी रेसिडेंट को ही अवेलेबल है. एक बार यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे. पॉज, कॉपी.
पास कॉपी, पास कॉपी। मैं फाइल सेव करके आ रहा हूं, बराबर। तब तक इसको अच्छे से रीड करो ताकि अपन सम्स कर सके।